India is turning out to be the most favored destination for foreign inflows. After Prime Minister Narendra Modi-led government's relentless efforts to relax complex policies and increase ease of doing business, there was a steep rise in foreign direct investments into the country. FDI inflows into India in 2016 calendar year jumped 18% to a record $46.4 billion. At the same time, global flows fell 13% in 2016. India attracted $32.5 billion FDI during April to November 2016. In fact, Economic Survey also said that India is one of the world's largest recipients of foreign direct investment. To attract even more foreign direct investment during his budget, foreign finance minister said that government will relax the FDI policy further. And he also proposed for the abolition of the Foreign Investment Promotion Board, FIPB. Government is also focusing more on enhancing infrastructure across the country, and there is a need for foreign investments. And India needs around $1 trillion for overhauling its infrastructure. So there is renewed optimism about the foreign inflows currently. And in fact, Mauritius remained India's top source of FDI inflows at $12.8 billion in the last reports that we've got. Well, to discuss on these, we have a guest with us, Mr. Ashok Kumar Bhattacharya, Editorial Director, Business Standard with us. Good morning, sir. Morning. Welcome to our studio. So FDI inflows, amidst some sort of gloomy picture around the globe, we're seeing FDI inflows rising in India. What exactly is the basic reason for this? Well, I mean, you have to admit that India is one of the few countries where investments are still attractive because of the demand potential in the country. It's a huge economy after all. Globally, as we understand, there's a decline in foreign investment flows about 13%, whereas in India, as you rightly said, it has gone up. True. And which is clearly a positive sign. But if you go look deeper into those numbers, there are interesting trends that come out. True. And I think a better analysis will be available if you look at those numbers. Now, the number one is that we are still largely dependent on two sectors for these FDI flows, which is the services sector and telecommunications sector. And much of it is happening through share transfers. So if FDI flows instead were directed more towards the manufacturing sector or the infrastructure sector, I would imagine that its follow-on effects, its impact on the economy on a larger number of people would have been more. This, of course, is a welcome sign that FDI flows continue to rise, even though the rate of growth is decelerating from 27% to 23%, and now it is 18%. So therefore, that's number one, that services sector and telecommunications sector share transfer this thing. So that's the second point is that, as you rightly said, that there's a sharp increase in inflows from Mauritius. Yes. Now, this I imagine is happening because of the lack of I'm sorry, just the opposite, the certainty over the kind of tax treatment which will be given to investment from Mauritius over a period of time. As you know, that the new Indo-Mauritius tax treaty has been now finalized, under which that investments till March end 2017 will continue to get the tax exemption or tax amnesty kind of a thing. Whereas from next year onwards, they will gradually be phased out. So this huge bump up that you are seeing in Mauritius investment flows after a decline last year is probably because people have realized, investors have realized that, look, this window is closing. True. So therefore, come through Mauritius, because that window will be closed from April 1, 2017. At least it will be phased out because you will not get the full tax exemptions. So therefore, if you look ahead, FDI flows rising is a good sign, because otherwise the investment numbers, the statistic, if you look at the GDP data, you don't see too much positive movement on fixed capital formation. Right. So therefore, FDI is coming in,
which is a good thing. So, but infrastructure, as you rightly mentioned, in fact, Yeah. we need at least $1 trillion for the complete overhauling Yeah, of this yeah, infrastructure yeah, picture. yeah. And in fact, Finance Minister has also been stressing that we're not getting investments to the infrastructure. What has to be done? Because in government is doing its own, putting in its own efforts to completely revive the infrastructure, but still, it is not creating any sort of interest among the foreign investors to come and invest within the infrastructure space. You know, to expect foreign investors to come in at a time when the Indian investors are either constrained because of their own problems, and the government has made its effort in this budget. They have raised capital outlays significantly by 12% compared to the current year. Absolutely. But I think a couple of more important steps need to be taken. One, the banking sector, which is undermined by NPAs, non-performing assets, and our large number of infrastructure companies are the biggest victim of those stressed assets. Absolutely. Now, unless the bankruptcy code gets activated, the insolvency processes and procedures are expedited, I don't see a quick revival in investments, whether it is in FDI or through domestic investment in the infrastructure sector, which is a key thing, which is why the government is stepping in and trying to meet that gap. But I don't think government alone can do the trick here. You need to de-stress the infrastructure companies. Quick steps, haircuts have to be announced, the government will have to step in, the bankruptcy code will have to be activated, the banks will have to come clean and start on a clean slate. So the host of measures are required before infrastructure investments start kicking in. प्रसार जी, अगर FDI जो किसी भी अर्थव्यवस्था में आती है और अगर उसके फ़ायदे को हमें समझना हो आसान भाषा में, तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे उसका करंट अकाउंट डेफिसिट, या फिर कहें GDP, या फिर कहें इन्वेस्टमेंट या एम्प्लॉयमेंट, उस पर किस तरह से असर डालता है, क्यों ज़रूरी है इस वक्त हमारे लिए? दो कारण हैं। एक तो है कि जो FDI जो है वो कैपिटल अकाउंट में आता है, तो इसमें करंट अकाउंट में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आता है, आता ही नहीं है एक्चुअली। वो सिर्फ आपकी जो FII मनी जो है वो भी एक्चुअली कैपिटल में नहीं, करंट में नहीं आता है। सो आप ये पहला आपका सवाल कि करंट अकाउंट में उसका इम्पैक्ट नहीं आता, ये कैपिटल अकाउंट में आता है। पर बहुत ज़रूरी ये है क्योंकि हमारे करंट अकाउंट का गैप अभी भी है, करीबन 1% GDP का गैप तो है, उस गैप को तो पूर्ण करना पड़ेगा। और अगर आप देखें अप्रैल से जनवरी तक का जो FII मनी जो है उसमें आउटफ्लो है, $3 बिलियन का आउटफ्लो है इस साल। सो अगर आप पहले अगर 9 महीने में, सॉरी 10 महीने नहीं, 9 महीने में आपका जो गैप जो है FII का फ्लो 3 बिलियन है, आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा है, और क्योंकि तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं तो बढ़ गया है। तो ये सारे जो गैप्स जो हैं, और आपकी जो एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर रहे हैं, आपके रेमिटेंसेस जो हैं वो भी कम आ रही हैं। तो सारा जो गैप जो है गोइंग फॉरवर्ड, आपको FII आपके इन्फ्लोज नहीं आ रही हैं, तो FDI इज़ वन सेक्टर विच कैन कीप यू गोइंग। अगर आप करंट अकाउंट के गैप को कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से उसको ब्रिज करना चाहते हैं, FDI का जो रोल है बहुत अहम है। तो ये रहा आपका पहला सवाल का जवाब। और दूसरा जो पॉइंट मैं बोलूँगा इसमें कि FDI अगर आती है तो देश में एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का माहौल बनता है, और अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर ऐसे सेक्टर्स में जाती है जहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जो मैंने आपको पहले आपके दोस्त को कहा कि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा आ रहा है, द बल्क ऑफ द मनी इज़ कमिंग इन सर्विस सेक्टर। नाउ इन इटसेल्फ वो ख़राब चीज़ नहीं है, सर्विस सेक्टर में जॉब क्रिएट होती हैं, पर वो जॉब्स एक तरह की जॉब्स होती हैं, वो शहरी इलाके में ज़्यादा होती हैं, ग्रामीण इलाके में कम होती हैं। और ऐसा आप जब जानते हैं कि हमारी जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो गाँवों में जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस जो है उसको अगर कम करने के लिए हमें जॉब्स क्रिएट करने ऐसे जगह जहाँ पे अगर मान लीजिए रूरल अर्बन सेंटर्स में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सके तो इम्पैक्ट और भी बेहतर होगा। तो FDI का इम्पैक्ट और भी बेहतर होगा अगर ये मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जाए,
और शेयर ट्रांसफर डील के बगैर अगर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स में इसकी एक इम्पैक्ट हो, तो दो चीज़ हमें देखनी है इसमें। दो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में अगर इन्वेस्टमेंट लाना है तो जिस तरह से कारोबार के नियम को आसान बनाने की दिशा में ज़रूर काम किए गए सरकार की तरफ से, या फिर FIPB जिस तरह से अबॉलिश करने की बात की गई, क्या ये अच्छे रिजल्ट्स देगा आने वाले दिनों? बजट में दो डिसीजन लिए गए थे। एक तो है कि FIPB को अबॉलिश करेंगे, वो मेरे ख्याल से एक अच्छी डिसीजन है, पर हमें ये देखना है कि FIPB अबॉलिश करने के बाद जो दूसरी जो नई व्यवस्था आती है वो FIPB से बेहतर है या और भी कठिन है। क्योंकि जो FIPB एक ऑफिशियल्स बॉडी थी, और ऑफिशियल्स बॉडी को जो हमने सुनने में जो आया है वो FIPB को अबॉलिश करने के बाद जो सेपरेट मिनिस्ट्रीज जो हैं वो मिनिस्ट्रीज अब अपने और से वो क्लियर कर देंगी। और अगर मान लें FIPB के बदले और कोई बॉडी आ जाती है कि भाई हम क्लियर करेंगे उसको, तो मुझे लगता है कि ये रिलैक्सेशन का जो असली जो बेनिफिट है वो जल्दी नहीं आएगा। दूसरा डिसीजन जो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो नॉर्म्स जो हैं प्रधान वित्त मंत्री ने कहा था कि उसको अब रिलैक्स कर रहे हैं, उसका फाइनल ब्यौरा जो है डिटेल्स अभी तक नहीं आए हैं। वो मेरे ख्याल से सरकार एक पॉलिसी लाएंगी। रिटेल के ऊपर काफ़ी क्लैरिटीज़ आनी चाहिए, ई-कॉमर्स के ऊपर काफ़ी क्लैरिटी आनी चाहिए। सो अगर ऐसे चीज़ों में अगर क्लैरिटी अगर आ जाए और विदेशी जो निवेशक जो हैं वो ज़्यादा अगर वो अट्रैक्टेड हो इंडिया के ऊपर, मेरे ख्याल से इसका एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही। वैसे ही हमारा इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, 18-20% बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है आज की तारीख में। तो अगर ये डिसीजन लिया जाता है ठीक तरह से FIPB का अबॉलिशन, जिससे कि जो अफसरशाही का जो एक जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से इसका तो इम्पैक्ट अच्छा होना चाहिए। लेकिन पोटेंशियल बहुत है, आप ये पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेस्ड है, उनके पास लोन देने के लिए लोन के डिमांड की कमी है इस वक्त। सरकार ने 12% कैपिटल आउटले बढ़ाया है, पर मेरे ख्याल से हमारी देश की जो स्थिति जो है, इकोनॉमिक डिमांड जो है, जो इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है, उसको देखते हुए ये काफ़ी नहीं होगी। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से हम विश्व की जो FDI की जो सोर्सेज जो हैं उससे हम ज़्यादा पैसे हमारे देश में लाकर जो कैपिटल क्रिएशन, एसेट्स क्रिएशन कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो सवाल हैं हमारे दर्शकों के वो हम लेंगे जीमेल और ट्विटर के ज़रिए। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Economy Today. We are getting in questions on our social networking handles, both Gmail and also Twitter. We have Mr. Ashok Bhattacharya with us to answer all those questions. So let's take these questions as well. The first question in our show on our Gmail handle, let's have a look at that question. This question is, what are the basic difference between foreign exchange reserve and foreign direct investment? This is by Mudit Chugh. The difference is that foreign exchange reserves are an outcome of a variety of factors, including FDI flows. Okay. Now, if somebody actually brings in money by way of investment, by way of their savings,
Now that foreign exchange money that foreign exchange doesn't get into our system. What gets into the system are rupees. Now what happens is that when the rupees are released against those reserves that release, the money is deposited in the Reserve Bank of India. Now whether there is an accretion to the reserves or there's a depletion in the reserves depends on your total balance of payment situation, whether your imports and exports, whether your inflows of FDI or whether the FII inflows are positive or negative. So foreign exchange reserves rising or falling is an outcome of many factors including FDI inflows. Okay. Let's take other question, Mr. Bhattacharya. This is also again on Gmail. Let's have a look at that second question which we got in today's show. What is the effect of demonetization on foreign direct investment? This question is by Mr. KP Singh. Mr. Bhattacharya. Well, one impact would be that the foreign investors always want and prefer a certain situation. They want stability and certainty. True. Now, when demonetization happened, it definitely shook the confidence of a foreign investor in the way the economy is being managed and run. Because clearly it was a disruptive move. It injected some sort of a shock into the economy. Demand was constrained, cash was taken out. So the foreign investor definitely would want a more assured, a more certain environment. So it will have an impact. And as you saw in the month-to-month data, November and December data did show that there was a decline in the FDI flows compared to October. Yes. So if you see from January to December, you see the last 2 months data is actually 3 billion or 3.5 billion of inflows coming in. So therefore it does have an impact because the foreign investor wants an assured, stable and certain situation. He doesn't want disruptive behavior in the economy. True. So it will definitely have an impact. But as a lot of people are saying that the impact of demonetization is wearing off, it may have an impact in a different way, but at least from the point of view of the investors, I think the impact is gradually wearing off and hopefully things will get better. Right. Let's have a look at other question as well. This question is on Twitter handle. This is the first tweet that we've got today. Let's have a look at this question. This question is by Dr. Alka Singh. Do we expect international civil aviation safety measures for contributing larger jump in foreign direct investment? Mr. Bhattacharya. Yeah, I don't know. There's definitely connection between making Indian skies more safe to foreign airlines coming in and joining the trying to take advantage of the Indian civil aviation market, which is growing. So I would imagine that yes, if he can make the Indian skies more safe through better norms, the civil aviation companies abroad may like to look at India with a fresh pair of eyes and would like to come and invest. But safety is not the only factor. True. You have to see whether there is demand and whether they are willing to come on terms which Indian government has laid down for investment in civil aviation. You still cannot run a completely foreign airline in India. It has to come within those caps that the government of India has set, like many other countries. Absolutely. Yeah. अगर अगला सवाल हम ले पाएँ, बलराम त्रिपाठी जो ट्वीट के ज़रिए हमसे ये समझना चाह रहे हैं, जो हमेशा से ही एक तरह से चर्चा का विषय रहा है कि अगर कोई भी FDI इस कंज्यूमर सेक्टर में आती है तो वो क्या जो एंटरप्रेन्योर्स MSME सेक्टर में उनको प्रभावित करेगी और क्या ये और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी? क्या बलराम जी की जो चिंता है वो जायज़ है भट्टाचार्य जी? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चिंता जायज़ नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को अगर आप 25 साल की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसमें ग्रेजुअली आज से क्रमशः जो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था, उससे मुझे लगता है कि जो भारतीय जो एंटरप्रेन्योर जो है उसको अच्छी तरह से उससे जूझ सकता है और जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से उसकी एफिशिएंसी लेवल्स और भी बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि जो MSME एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो दब जाएंगे या निकल जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप कंज्यूमर सेक्टर में देखते हैं
तो बहुत ऐसे बड़ी बड़ी कंज्यूमर सेक्टर कंपनी इस देश में लिबरलाइजेशन के बाद आई हैं और भारतीय कंपनियों से मार खाकर चली गई हैं। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय कंज्यूमर सेक्टर, पर्टिकुलरली कंज्यूमर गुड सेक्टर में जो इंडियन कंपनीज जो हैं वो कम्पीट कर सकती हैं और इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जॉब्स क्रिएट का भी कोई जो उनकी शंका जो है वो बेबुनियाद है, क्योंकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या इंडियन इन्वेस्टमेंट हो, जॉब्स तो क्रिएट होनी है तो वैसी होनी है। तो और जो जॉब जो एम्प्लॉई जो है वो यही देखता है कि वो फॉरेन कैपिटल है, इंडियन कैपिटल है, वो देखता है कि कोई जॉब है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि नहीं है कि एफडीआई कंज्यूमर गुड सेक्टर में ऐसा कोई प्रभाव डालेगा जिससे कि नौकरियों की कोई कमी होगी। नौकरी जितनी बढ़नी है वो ऐसे ही बढ़ जाएंगी। Right. Let's have a look at other question, Mr. Bhattacharya. We have other question on our social networking handles. Let's have a look at that too. This question is on our Gmail handle. And what is the limit of FDI for long run since profit will be sent out of the country? There is another part of this question as well. Since domestic investment will not bring technology. This question is by Mr. Anubhav Jain. Well, you know, this is a flawed understanding of what happens in foreign investment. True. Because when foreign investment comes, of course, by way of dividends or repatriation of profit, the money can go out. But if you look at the data for the last 16, 17 years, you will see how the foreign investor are actually reinvesting their earnings in the same projects increasingly. Today, for example, if you look at the total FDI inflows into the country, which is total FDI inflows, not just equity, is around $55 billion last year. Out of $55 billion, almost 25 to 30% money is actually reinvested earnings, which means the companies, the foreign shareholder could have taken that money out of the country, but he did not. He decided to keep the money in the country by reinvesting it in his project, because he realized that he can earn more money out of that through dividends. So almost 25 to 30% of total FDI is coming not by fresh money, but by reinvested earnings. Right. So to believe that the FDI would mean that money is going out of the country is completely flawed. And secondly, this is actually the spin-off benefits of FDI are on so many fronts that the concerns that the money will go out of the country has got no basis. Right. आपने शुरू में कहा कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एफडीआई आता है तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अब रेलवेज़ में, डिफेंस में जिस तरह से हमने देखा एफडीआई खुली, कुछ सेक्टर्स में क्या कुछ सनराइज सेक्टर्स आप बता सकते हैं जिसमें एफडीआई ज़्यादा आने की उम्मीद है, जिससे टेक्नोलॉजी भी हमें मिले, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो? वेल देखिए, जो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है एंड ऑल्सो ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इस वक्त डिफेंस और रेलवेज़ में, जैसे आपने सही कहा कि पिछले 1-1.5 साल में ये जो सेक्टर्स को लिबरलाइज कर दिया गया है, और अभी तक हमें इंटेंशंस तो काफ़ी आई हैं, पर अपार्ट फ्रॉम जी के सिवा और कोई इन्वेस्टमेंट अभी तक हमें नज़र नहीं आया है। और ये भी बात सही है कि अगर कोई बड़ा सेक्टर को खोला गया, इन्वेस्टमेंट खोला गया, ये 1-2 साल का सवाल नहीं होता है। इट्स अ मैटर ऑफ सम ईयर्स बिफोर फॉरेन इन्वेस्टर टेक्स दिस थिंग। सो मैं तो कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पर्टिकुलरली जो जापान और यूएस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन्वेस्टमेंट की जो कैपिटल है और जो टेक्नोलॉजी जो है, दोनों हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरतमंद साबित हो सकती हैं। मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर हैं, रेलवेज़ और डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई की जो फ्लोज जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, और हमें आशा करना चाहिए कि वहाँ पे एफडीआई। और अगर जल्दी से इंश्योरेंस पे आपकी राय ली जाए, क्योंकि उसको भी अब बहुत सारी भारतीय कंपनी हैं जिनके आईपीओ लेकर के सरकार आ रही है, तो क्या वहाँ पर कुछ एफडीआई की संभावना? देखिए, उसमें अगर एफडीआई आएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, उसके साथ साथ न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एवरीथिंग विल कम। बट उसमें मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज जो हैं उसकी शेयर ट्रांसफ़र होगी, तो उसमें उसका जो इम्पैक्ट होगा, जैसे मैं पहले कह रहा था कि शेयर ट्रांसफ़र में अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और शेयर ट्रांसफ़र थ्रू एफडीआई,
तो दोनों के डिफरेंट अंतर होते हैं। यहाँ बिजनेस बढ़ सकती है, पर शेयर ट्रांसफ़र से आपकी इम्पैक्ट थोड़ी बहुत लिमिटेड होगी, पर नए प्रोजेक्ट्स, नए इंश्योरेंस कंपनीज खोलेंगे तो इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होगा। Mr. Bhattacharya, I have another question as well. When we talk about FDI, how do you look at FDI's potential for, to contribute for the economic growth when we compare it with other growth models? Say, for example, developed country like South Korea, its FDI stocks is just 60% of what India has, at least at this moment. But it is still a developed country. How important will FDI become in the growth potential and then, becoming a developed economy? Well, I will give you some thing. China's annual FDI is about $100 billion, $103 billion. True. Now, and this has been going on for quite some years. So I think we first need, we have reached the $50 billion mark last year. True. Now I think we need to really sort of take it forward and stabilize it at a certain level where India continues to be the favored destination for all foreign investors. And because it is through foreign capital which supplementing the Indian capital can actually India can hope to realize its dream of sustaining a growth level of 7 to 8%. True. Without foreign capital, which as one of the questioners actually had expressed doubts, foreign capital also means you get foreign technology, because foreign technology will not come just on its own. Right. It will come only when the foreign capital, if somebody puts in his money, then only he gives his technology. True. So therefore, with foreign capital comes technology, with that comes productivity gains, with that comes high GDP growth. So therefore, they are all linked and part of the value chain. With more FDIs, more technology, more capital, and more productivity, and therefore higher growth. Absolutely. Thank you very much, Mr. Bhattacharya, for coming to the studio and giving your analysis and answering all the questions, both from the anchors and also from the viewers as well. So, FDI, as Mr. Bhattacharya says, is pretty much crucial and important for the economic growth of our country as well. And before we wind up, let's have a look at the market situation. At this moment, Indian markets are pretty much flat, around 28,672, up by just 11 points. फिलहाल इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी वेंकट को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।